All right, we are live. Hello, good afternoon, and welcome back to the Law Entrance YouTube channel and to another session of the Hindu analysis. A delay of few seconds due to some technical glitch, but I hope I'm audible, visible, and clear to everyone now. If yes, please give me a response in the chat box if you are here and listening. Ashnur is here. Good afternoon. Very good afternoon to all of you. It's been a long while since we met. I hope you all had a good and productive weekend. Chalo, let's begin. Let's begin our discussion for the day. Devika is here. Good afternoon. Let me just quickly fetch the presentation for you all. And the newspaper as well. Okay, I hope the screen is visible. I hope I'm audible and visible. And there, guys, quickly give me a yes in the chat box if I'm audible, visible along with the presentation. A quick yes in the chat box if everything is working fine. Okay, lovely, wonderful. ठीक है, चलो 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 लेट्स बिगिन, लेट्स स्टार्ट आवर डिस्कशन फॉर द डे. तो आज का जो न्यूज़पेपर है उसमें बहुत ज़्यादा चीज़ें नहीं हैं फ्रॉम अ कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू. सो there are mostly topics which are repeated which we have already discussed, or there are topics which are not that relevant. So आज उतना लंबा नहीं होगा हमारा Hindu analysis, but we have three interesting topics. The first one is rat hole mining. Now what is rat hole mining? This is a technique of mining coal which used to be prevalent in the northeastern states of India. And why is it in this? We discuss that. And the second topic is the AI summit, which is happening today and tomorrow. Where is it happening? It's happening in Paris, France. And why is it important? Because India is co-chairing this particular summit with France. तो अभी तक AI की दो समिट्स हो चुकी हैं. One was in UK and one was in South Korea. इंडिया ने दोनों में पार्टिसिपेट किया था, बट दिस टाइम इंडिया इज द को चेयर इन द थर्ड एआई समिट, ग्लोबल एआई समिट. तो क्यों ये इंपॉर्टेंट है, क्या इसकी सिग्निफिकेंस है, विल डिस्कस ऑल ऑफ दैट. देन थर्ड आर्टिकल इज समथिंग व्हिच वी हैव ऑल्दो डिस्कस्ड, बट इसमें थोड़ा सा डिटेल डिस्कशन है अबाउट द ट्रेड रिलेशनशिप बिटवीन यूएस एंड चाइना एंड हाउ यूएस इज heavily reliant on China for import of a lot of things, and that is something which we'll discuss. Then of course we'll do vocab. So छोटा सा एजेंडा है आज का, and let's go for it right away. Let's go to our newspaper and see what do we have. Sure. Also, for people who watch the Hindu analysis after the live stream, that is in a recorded manner, please tell me in the comment section whenever you watch the video that what would be your preferred timing for the Hindu analysis, because I need live participation and we are not getting the amount of participants which I am expecting in the live session. So I'm planning if we can probably tweak the time a little bit. Maybe if we can have the Hindu analysis in the evening, somewhere around 5 or 6. Would that be a better alternative for you guys? Do let me know in the comment section. Also, people who are watching live, Ashnur, Pro Gaming, all of you guys, you guys also tell me what would be your preferred time slot for this class, because the more participants in the live format, the better and more engaging this session becomes, and I get more energized with more participation. So it's in the best interest of all of us that we probably have a time slot which is suitable to everyone. Okay. Chalo. With that being said, let's start with our discussion of the newspaper today. On the left hand side, you see 31 Maoists and 2 Jawans killed in Chhattisgarh encounter. So this was in Bijapur in Chhattisgarh, where this encounter has happened. So Maoists are, you could say, internal threats. They are not external threats like terrorists
They are people of the country, of people who are Indians, but are let's say not very happy with the current regime or the current government or the current state of affairs or the current administration, and thus they are sort of like rebels. So yeah, 31 Maoists and two Jawans have been killed. Then on the right hand side, there's a major news which says that N. Biren Singh, who was the chief minister of Manipur, has now quit his post, has resigned from his post as CM after meeting Amit Shah, who's our home minister. Now, this comes after a very long, I would say, speculative wait, and after almost 2 years since Manipur has been in news, in crisis, in hostility. So he recently, well, yesterday, submitted his resignation, and the governor has accepted the resignation as well. You can see the picture here, and his resignation on um, Sunday to Governor Ajay Kumar Bhalla in Imphal, which is the capital of Manipur. Right now, दैट्स ऑल अबाउट दिस पर्टिकुलर न्यूज. इसमें कुछ एनालिसिस करने का नहीं है. इनके पास वैसे भी पार्टी का ज़्यादा सपोर्ट था नहीं इनकी. सीएम अपीयर्स टू हैव लॉस्ट सपोर्ट, यहाँ लिखा भी है, बिफोर रिजाइनिंग. ओनली 20 पीपल टर्न्ड अप फॉर द मीटिंग हेल्ड बाय द सीएम अ डे बिफोर हिज रेजिग्नेशन आउट ऑफ द 46 एमएलएस ऑफ द रूलिंग पार्टी. सो इन्होंने खुद ही रिजाइन कर दिया इससे पहले कि इनको निकाला जाए. सो या दैट्स दैट. लेट्स मूव अहेड एंड सी व्हाट एल्स डू वी हैव. City-based news is not important. Talking about Delhi, Delhi elections result were announced on 8th on Sunday, and who has won? The BJP party has BJP has won over Aam Aadmi Party, and they have secured, I think, 48 seats or 47 seats. I don't recall the number last which I saw, but I think 47, 48 seats, and Aam Aadmi Party got the remaining 22, 23 seats. Congress got something which Aryabhat invented long back ago. So, yeah, that's about the Delhi election. So, basically, BJP would be forming their government, and chief minister from BJP would be appointed as the CM of Delhi. Okay, moving ahead to state-based news, will not reclaim funds given to ineligible beneficiaries of Ladki Bahin Yojana, says Minister of Maharashtra. This is not important for us. Union opposition in Bengal resist new policy of diverting tea garden land for tourism. This is also not important. Let's move ahead. BJP begins talk to pick Delhi CM oath taking likely after PM's US visit. So Modi ji is going to US to visit his काउंटरपार्ट मिस्टर ट्रंप इन वॉशिंगटन डीसी, एंड उसके बाद ओथ टेकिंग होगी दिल्ली के सीएम की. 48 winning candidates, so 48 seats won by BJP, 22 by Aam Aadmi Party, 48 out of 70. You need how many to form a government in Delhi? You need 36 seats, which is one more than half, right? Simple majority. So they needed 36, they have gotten 48, and a big loss for Aam Aadmi Party. Arvind Kejriwal also lost from his own constituency, the New Delhi constituency, to Parvesh Sahib Singh. And most of the significant Aam Aadmi Party leaders like Manish Sisodia, like Satyendra Jain, all of these guys also lost their seats. I think only Atishi is a prominent Aam Aadmi Party politician who won from her seat in Kalkaji. But yeah, that's all you need to know about Delhi elections. We'll talk about it when the new CM is appointed. Let's move ahead. Okay. 14 fishermen from Tamil Nadu arrested by Sri Lankan Navy. This has become a news of every day now. Okay. All right. What else do we have? Okay, editorial section. Keeping a watch on the growing arc of violence. Now, this is talking about violence where violence across the world, like in context is the Russia-Ukraine violence, which is currently going on, as well as the Israel-Hamas violence, both of which we have already discussed. So this is an article which you can read on your own and understand because you have the context of both the geopolitical scenarios. But that being said, based on this particular article, and also because it's due from our side, Salik sir is doing a special session on Russia-Ukraine conflict today at 6 p.m. Make sure all of you attended live or maybe watch the recording when it goes live. And yeah, that's about it.
This article talks about subterranean activity. This article talks about a revival of terrorism, talks about warnings that need to be paid attention. So you can read this one on your own. While matters relating to new terror methods and terror attacks could still be evolving, the warnings should not be ignored. On the left hand side, you see a political article, Aam Aadmi Party related. Aam Aadmi Party's welfareism was a failed attempt to sidestep the ideological divide. What do you mean by welfareism? So, I think most of you must have seen this in the news or in the newspaper about freebies being distributed to people. बिजली free कर देंगे, पानी free कर देंगे, and 2500 रुपए to all the women or all the unemployed youth. So that is sort of called a welfareism sort of way of doing campaigning. But it did not work for Aam Aadmi Party, although all the parties were doing it, to be fair. But Aam Aadmi Party failed to capitalize on it this time, and the ideological divide got the better of them. Okay, gift horse's teeth. So this essentially means that although we are giving a lot of allocation and budget to research and development in this year's budget, be it the 20,000 rupees for nuclear reactors or be it crores of rupees for AI Excellence Center. But there is still a long way to go, and we need a lot of infrastructure in order to get the output of our scientific research, and we do not have that sort of infrastructure. सिर्फ high allocation से काम नहीं बनेगा. To boost scientific research, we need to take measures on the ground in order to get more investment, get more people incentivized towards working in R&D and science and development, and then getting the output in the correct manner. So that is what this article is about. It's an interesting article, you can read it. Just talk about numbers कि R&D पे हम अपनी GDP का कितना खर्च करते हैं. हम काफी बार डिस्कस कर चुके हैं इस बारे में, इसलिए मैं दोबारा इसकी डिटेल में नहीं जा रहा हूँ. बट दिस इज मोस्टली अबाउट रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे हमें और पैसे खर्च करने चाहिए, उस पर और फोकस करना चाहिए. On the right hand side, you have an aerospace expo to further India's global presence. तो ये आज से शुरू हो रहा है. It's going to happen in Bangalore, an aerospace expo or an aerospace, you could say, show, Aero India 2025, Indian Air Force Station जो येलंका में है, which is in Bengaluru, वहाँ पे ये कराया जाएगा. It's the 15th edition of this air show, and this is basically to show India's capabilities, Air Force की capabilities specifically. It shows the transformation from the 1990s, shows that India's intent to emerge as a global leader in defense and aerospace production is going strong. Highlights of the exposition: what are the jets which are going to participate? World's most advanced fighter jets: Russian Sukhoi 57, American F-35. Sukhoi 57 is for superior stealth and agility. F-35 is for technological superiority. And India would be showcasing multiple other combat aircrafts. तो ये जैसे जैसे we'll get more news about this, we'll talk about this. But अभी के लिए इतना ही है कि there is an aero show which is happening in Bengaluru starting from today for the next 3-4 days. ठीक है जी. Then there is an article on the left hand side which talks about India's opportunity at the AI Action Summit. Now, as we were discussing, this summit is happening in Paris, in France, and India is co-chairing it with France, and this is a good opportunity for India to put forward its perspectives as a leader of the global south. You guys understand what is the global south in the geopolitical context? Basically, global north में आपके आ गई countries like USA, Russia, Europe, northern hemisphere वाली countries, and global south में आ गई आपकी India, China, South Africa, Brazil, and Australia, ये सारी countries. So India's opportunity at the AI Action Summit is to put forward the voices of the global south, emerge as a leader of the global south, and make more, I would say, progress in the field of AI in a global manner. And that is what this article talks about. That is a priority. As a co-chair of Paris meeting, India must leverage its position to advance the key AI priorities of the global south. ठीक है जी. तो इसके बारे में हम करेंगे, थोड़ी और बात करेंगे. Then there is an article which says China contributes substantially to US के biggest imports. तो यहाँ पे इन्होंने देखो different charts बना के आपको explain किया है कि US जो है चाइना से क्या क्या चीजें कितनी % import करता है, and in what things is US the top importer of China
or China is the top exporter to US. So a lot of numbers and figures which we'll discuss in a very concise and short manner when we come back to our analysis. But this is in context with the recent trade tariffs which have been applied on China by the US, and now we were discussing that China has applied counter tariffs on US to counter that particular move. So यही है इस आर्टिकल में. Then what do we have? What does the budget offer railways? ये हम already बात कर चुके हैं. चलो इसकी gist पढ़ लेते हैं हम जल्दी से. The railway minister said that immense thrust has been given for development of infra, modernization of stations and trains, enhancements of connectivity. There was no mention of increase in Kavach coverage for 25-26. In fact, the initial rollout of 1465 km near Sikandrabad, not a single kilometer has been added. The real slate of hand, however, was the declaration that the IR, that is Indian Railways, is poised to become the world's second largest freight carrier. Freight matlab goods carrier, touching 1.6 billion tons of cargo. Given India's size, this number is in isolation is meaningless. So they're saying कि India, although second largest freight carrier बन रहा है, but India का goods transportation का size भी तो देखो, उस comparison में this is nothing. And slate of the hand का मतलब होता है, इसको हिंदी में हम कहते हैं हाथ की सफाई, जादूगरी. So that is what it means. Kavach क्या होता है? What is Kavach? Kavach is an initiative or a scheme which is to curb your rail accident, जिसमें आप रेलवे ट्रैक्स पे सेंसर्स और लगाते हो, इक्विपमेंट्स, डिवाइसेस लगाते हो, जिससे अगर मान लो कोई ट्रेन एक्सीडेंट होने की प्रोबेबिलिटी है जिसमें ड्राइवर इज नॉट पेइंग अटेंशन या फिर द ट्रेन इज अबाउट टू गेट डीरेल्ड, तो द ड्राइवर कैन गेट अलर्ट्स. सो उससे रिलेटेड है आपकी कवच स्कीम, जिसके लिए ट्रैक्स में वो सेंसर्स लगे होने चाहिए. बट उसका कवरेज कितना हुआ है? अभी सिर्फ 1465 किलोमीटर्स का कवरेज हुआ है कवच स्कीम का, एंड इट इज फार फ्रॉम आवर गोल. जस्ट गिव मी वन मोमेंट गाइस. Yeah, sorry about that. So we were discussing the Kavach scheme, right? So रेलवे बजट की इन्होंने बात करी है कि कुछ ऐसा सिग्निफिकेंट नहीं हुआ है इस बार रेलवे बजट में, एंड कवच स्कीम इज नाउ merely a spectacle. The average electrification rate is also really slow, and the greenest railway in the world is far from reality. ठीक है. How is the budget allocated fund for urban development? चलो इसकी भी हम जिस्ट पढ़ लेते हैं. The total outlay for urban development stands at 96,777 crore, higher than last year's budget. A new urban challenge fund of 10,000 crore has been introduced. This we talked about. Smart cities se related hai. The government has set an ambitious target of 1 lakh crore to implement urban redevelopment programs, while infra investment are necessary, neglecting social and economic equity. That means the disparity and the gap between the rich and the poor could widen the existing disparity, right? So इसमें बहुत सारी चीजें डिस्कस हुई थी इस बार वाले बजट में. There was discussion of an urban challenge fund, there was discussion of the smart city mission, there was discussion of the Udan scheme to add more airports, more greenfield airports in Bihar as well. There was discussion of the Swami 2.0 fund for real estate projects. So वो सारी चीजें हम already discuss कर चुके हैं. अगर आपने अभी तक बजट वाली वीडियो नहीं देखी है, so it's high time that you go out and check that particular video. It's on the channel. ठीक है. चलो, why are Apple and game maker Epic facing off against each other? This is not important for us. A pornography app that can now be accessed in EU with an iPhone has reignited a long simmering battle between Apple and Epic. In the EU, the Digital Market Act lets iOS and iPad users install apps from alternative app marketplaces or even from authorized developers' websites. बट आउटसाइड EU आप ये चीज़ नहीं कर पाते हो iOS पे. तो अगर आप इंडिया में iOS या एप्पल डिवाइस यूज़ करते हो तो आप देखोगे कि आप एप्स नहीं इंस्टॉल कर पाते हो जो iOS पे नहीं होते हैं, मतलब एप्पल स्टोर पे नहीं होते हैं. You cannot install APKs and exe files and all of those things unless you jailbreak your iPhone, which is चलो छोड़ो, उसमें नहीं जाते. बट पढ़ लेना इसको अगर इंटरेस्ट हो आपको, बट ऐसा कुछ important है नहीं है. All right. Plan to amend nuclear liability law may enthuse American and French firms.
Okay, announcement comes ahead of Modi's visit to Paris and Washington this week. Government's U-turn a decade later spells hope for Westinghouse. Electricité de France plans deals for new age small reactors. Experts hail the decision but call for more clarity on amendments. So India's only foreign nuclear reactor is Rosatom, which is in Kundankulam nuclear power plant in Tamil Nadu, which is also the largest nuclear power plant in India. ये हमने क्विज में भी देखा था क्वेश्चन। क्विज में मैंने क्वेश्चन आपसे पूछा था विच इज द फर्स्ट न्यूक्लियर पावर प्लांट ऑफ इंडिया, जो कि था तारापुर। बट या दिस आर्टिकल इज रिलेटेड टू इंडिया एंड फ्रांस बिल्डिंग न्यूक्लियर रिएक्टर। सो ये आप पढ़ सकते हो, अच्छा इंटरेस्टिंग आर्टिकल है। Then we have in pole bound Meghalaya, rat hole coal mining hopes ride on Article 371. तो ये आपको दिख रहा होगा इमेज में, दीज आर रैट होल्स फॉर माइनिंग ऑफ कोल। सो इसमें घुस के एक आदमी जो है कोल माइनिंग करता है मैनुअली। दिस इज फ्रॉम मेघालय, अ फोटो ऑफ रैट होल माइंस इन ईस्ट जेनशिया हिल्स। सो अब ये माइनिंग जो है रैट होल माइनिंग, इसको बैन कर दिया था एनजीटी ने 2014 में। एंड क्यों बैन कर दिया था उस पर हम डिस्कशन करेंगे। बट अब क्योंकि दोबारा इलेक्शंस हो रहे हैं मेघालय में, तो एक रीजनल पार्टी वहाँ की विच इज़ द वीपीपी, वो कह रही है कि हम रैट होल माइनिंग को फिर से चालू करवा देंगे यूजिंग आर्टिकल 371। अब आर्टिकल 371 क्या है और उसके थ्रू कैसे आप रैट होल माइनिंग स्टार्ट कर सकते हो, विल डिस्कस दैट इन आवर एनालिसिस। ओके, नाउ बेंगलुरु पुलिस गिव एड शीरन अ बीटल्स मोमेंट। एड शीरन भाई साहब जो हैं आए हुए हैं इंडिया परफॉर्म करने, एंड वो मुंबई में गाना गा रहे थे सड़क किनारे खड़े होके, जिसको बस्किंग कहते हैं। बट पुलिस ने उनको पहचाना नहीं ऑब्वियसली एंड खदेड़ दिया वहां से कि ऐसे कैसे गाना गा सकते हो तुम बिना परमिशन के, तुम एड शीरन हो गए लेकिन अपने घर में हो गए, यहाँ से हटो। तो काफी बेइज्जती भरा मोमेंट एड शीरन भाई के लिए। बट एनीवे, इट इज व्हाट इट इज। सॉरी, बैंगलोर था, चर्च स्ट्रीट बैंगलोर, इट्स नॉट बॉम्बे, इट्स बैंगलोर, माय बैड, जहाँ पे ये इंसिडेंट हुआ। Only 20 of 46 NDA MLAs took part in meeting held by Bahrain, ये हम डिस्कस कर लिया। Atishi resigns to continue in post till new government takes over. So she has resigned as the CM. Earlier she was holding the post of CM, right? When Arvind Kejriwal came back from jail till then. Hmm. Okay. Nothing interesting here. Global confidence in India's aerospace capabilities is growing, says Rajnath Singh, who's our defense minister. 90 countries are participating in the Aero India show. The defense secretary says government hopeful that supply of LC-8 Tejas from 25-26 would be as per the original plan. The Aero India biggest air show in Asia to begin today in Bangalore. Okay. US aircraft उसमें participate कर रहा है. As you can see, the F-35 fighter jet, Chief of Air Force and Army fly together in light combat aircraft Tejas. You can see Air Chief Marshal AP Singh along with General Upendra Dwivedi, and they are going to take a sortie in this Tejas aircraft. Okay, this is not important. Okay, will do the job of executing Trump's Gaza plan, says Israel Prime Minister. तो इन दोनों का अभी इसराइल और यूएस का काफी भाईचारा चल रहा है, एंड बोथ ऑफ देम आर हेल बेंट एट what they call as cleansing Gaza of all the Palestinians, relocating Gazans to some other place, displacing them. So Netanyahu says yes, president's proposal for relocating Gazans is the first fresh idea in years. He says the real issue is finding a country that will agree to take in the displaced population. Okay, Netanyahu's Palestinian state on Saudi land remark is flayed. Okay. Hmm. India won the second one day against England yesterday on Sunday. Won the series. Rohit Sharma hit a century. Good match. Okay. So yeah, that's pretty much it about today's newspaper. Let's come back to our analysis segment and discuss the three articles which we are going to discuss in detail. All right.
Just give me one moment. Also, another interesting one-liner for you guys is the exercise equivalent, which happens between India and Maldives, is announced and is going to be held in Maldives this year. It started back in 2009. पिछला जो एक्सरसाइज का एडिशन था दैट हैपेंड इन 2023, वो इंडिया में हुआ था, उत्तराखंड में, चौपाटिया इन उत्तराखंड. एंड दिस ईयर द एक्सरसाइज एक्वेरेंट, which means friends in the Dhivehi language, the language used in Maldives, is going to happen this year in Maldives. It's a military exercise between India and Maldives. ठीक है जी. चलो, अब हम स्टार्ट करते हैं अपना डिस्कशन ऑन रैट होल माइनिंग. So, as you can see, in pole-bound Meghalaya, rat hole coal mining hopes ride on Article 371. Now, first of all, what exactly is Article 371? Let's understand that. Then we'll talk about how it is related to rat coal mining. So, Article 371 is an article which gives special powers to certain states. There's happened 370 सुना होगा, which gives special powers to which state? Article 370. Tell me in the chat box. Article 370 is for special status of which state? JNK, correct. And 371 is a similar article which also talks about special powers to certain states. Article 371 originally constitution में था for two states which were Maharashtra and Gujarat, क्योंकि वहाँ पे काफी सारे princely states थे, Saurashtra and all of those. But through amendments, multiple other provisions, जैसे provisions 371A से लेके J तक, these were added through multiple amendments using Article 368, which is the article which we use for amendment of the Constitution. And ये A से लेके J तक जो आर्टिकल्स ऐड हुए थे, उसमें से आर्टिकल 371A बात करता है नागालैंड की, जिसमें प्रोविजंस है कि आप जो है स्पेशल रिसोर्सेज और जो लैंड के यूजेज हैं उसकी राइट्स को आप एक्सप्लॉइट नहीं कर सकते अपार्ट फ्रॉम द नागा कस्टमरी लॉ. मतलब वहाँ के जो ट्रेडिशनल्स हैं, नागा लोग जो हैं, जो नागा ट्राइब्स हैं वहाँ की, वो वहाँ के रिसोर्सेज एंड वहाँ का लैंड यूज कर सकती है और कोई वहाँ का रिसोर्स और लैंड यूज नहीं कर सकता. स्पेशल प्रोटेक्शन है उस लैंड को. ठीक है. वैसे ही सिमिलरली एनजीटी ने बैन कर दी थी रैट होल माइनिंग मेघालय में, विच इज ऑल्सो वन ऑफ द नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स. अब रैट होल माइनिंग होती क्या है? रैट होल माइनिंग इज, जैसा कि आप इमेज में देख पा रहे हो, दोज आर रैट होल्स जिसमें कोल माइंस है ये, एंड इससे कोल एक्सट्रैक्ट करते हैं लोग इसके अंदर घुस के. Now, of course, it does not look very safe because these are very narrow dug pits into the ground, and only one or two people can descend and extract that coal manually, khod ke, using ropes and ladders. So this has multiple concerns. It has, of course, safety concerns. It has ventilation concerns. It has safety gear related concerns. It has concerns of frequent accidents happening due to injuries and fatalities. It has concerns for the environment as well. It has land degradation concerns, deforestation concerns, water pollution concerns. So basically बहुत सारे concerns, primarily safety related and environment related. ये दोनों चीजों को देखते हुए in the year 2014 Supreme Court ने बैन लगा दिया था रैट होल माइनिंग पे, और फिर ये बैन जो है एक्सटेंड हो गया था टुवर्ड्स ऑल नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स. बट अब using the special provisions of Article 371, if the ruling, if the this party VPP comes to power, they are saying that they would reinstate, the special status of rat mining, the special provision to restart rat mining in this particular rat hole mining, pardon me, in this particular state, in this particular region. ठीक है. तो यह जो आर्टिकल 371 है, जो कि पार्ट 21 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में आता है, वो स्पेशल पावर्स देता है स्टेट्स को कि टेम्पररी और ट्रांजिशनल बेसिस पे आप कुछ स्पेशल प्रोविजंस कर सकते हो इन अ रिस्पेक्टिव स्टेट. सो आर्टिकल 371A से लेके J तक जो है स्पेशल प्रोविजंस है फॉर द नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स. इनिशियली महाराष्ट्र और गुजरात के लिए थे. गुजरात में काफी सारे ऐसे रीजन्स थे ना, सौराष्ट्र हो गया, कच्छ हो गया,
एंड महाराष्ट्र की अगर आप बात करो तो विदर्भ हो गया, मराठावाड़ा हो गया। सो उनके लिए आर्टिकल 371 लाया गया था, बट ए टू जे फिर नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स के लिए लाए गए। एंड यहाँ पे एक और चीज की बात करना इंपॉर्टेंट है, विच इज द फिफ्थ एंड द सिक्स्थ शेड्यूल। इसकी हम पहले भी बात कर चुके हैं जब हम जम्मू कश्मीर की बात कर रहे थे, व्हेन दे वर आस्किंग द सेंटर टू इंक्लूड JNK इन द सिक्स्थ शेड्यूल। तो सिक्स्थ शेड्यूल में ऐसा खास क्या है? सिक्स्थ शेड्यूल में अगेन ट्राइबल कम्युनिटीज के लिए, लोकल कम्युनिटीज के लिए स्पेशल प्रोटेक्शन है कि वहां का लैंड और रिसोर्स सिर्फ उन्हीं के लिए यूज होगा। अभी सिक्स्थ शेड्यूल में कौन से स्टेट्स आते हैं? सिर्फ 4 नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स आते हैं अंडर द सिक्स्थ शेड्यूल, विच इज असम, मेघालय, त्रिपुरा एंड मिजोरम। ठीक है, मैं लिख देता हूँ यहाँ पे। सिक्स्थ शेड्यूल pertains to Assam, Meghalaya, Mizoram, and one more state which is Tripura. Yeah. So आपका त्रिपुरा। तो ये 4 स्टेट्स जो है सिक्स शेड्यूल के अंडर दे हैव स्पेशल प्रोविजन, स्पेशल राइट्स, स्पेशल प्रोविजंस फॉर एडमिनिस्ट्रेशन एज वेल। इनकी लोकल डिस्ट्रिक्ट काउंसिल्स भी होती हैं, लोकल लॉज भी होते हैं, बहुत सारी चीजें होती हैं, ये हमने काफी बार डिस्कस किया है। बट देयर इज अ सिमिलर शेड्यूल विच इज द फिफ्थ शेड्यूल, जो कि ये प्रोटेक्शन देता है टू अदर स्टेट्स विच आर नॉट दीज 4 स्टेट्स, बट उनके अलावा जो स्टेट्स हैं, उन स्टेट्स में जो ट्राइबल ग्रुप्स हैं, उन स्टेट्स में जो आपके बैकवर्ड ग्रुप्स एंड क्लासेस हैं, उनको प्रोटेक्ट करने के लिए फिफ्थ शेड्यूल इज द प्रोविजन इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो ऑल इन ऑल कहानी सारी ये है कि अगर ये वाली पार्टी जीत जाती है तो यूजिंग आर्टिकल 371 दे कैन रीइंस्टेट और रीस्टार्ट रैट होल कोल माइनिंग इन द स्टेट। नाउ अब ये अच्छी बात है या बुरी बात है, दिस इज ऑन यू गाइस टू डिसाइड, बट दैट इज व्हाट द न्यूज़ इज। ठीक है जी, चलो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन विच इज चाइना कंट्रीब्यूट सब्सटैंशियली टू यूएस इंपोर्ट्स। तो हमने बात करी थी कि यूएस ने चाइना पे टैरिफ लगा दिए, कनाडा मैक्सिको पे भी लगाए थे, बट मैक्सिको पे लिफ्ट कर दिए मोस्ट ऑफ द टैरिफ्स। एंड क्या बोल के लगाए थे कि इलीगल एलियंस एंड ड्रग्स का सप्लाई हो रहा है हमारी कंट्री में, ड्रग्स का यूजेज जो है भेजा जा रहा है इन कंट्रीज से। एंड यूएस के अगर ट्रेड रिलेशंस की हम बात करें तो देयर आर अप्रोक्सीमेटली 75-80 कंट्रीज जिनके साथ यूएस के ट्रेड रिलेशंस हैं। एंड उसमें से एनी गेसेस किस कंट्री का मैक्सिमम चंक है? द कंट्री इज चाइना। ठीक है, चाइना अकाउंट्स फॉर 18% ऑफ ऑल द इंपोर्ट्स विच कम इनटू यूएस। दिस वी आर टॉकिंग अबाउट द डेटा ऑफ 2018 से लेकर 2023 तक। तो 18% जो है चाइना का शेयर है यूएस इंपोर्ट्स की बात करें। देयर इज Mexico on the second place, and then there is Canada on the third place. India जो है इसमें I think 9th place पे आता है with 3.2% of chunk. So Mexico का 14% है, Canada का 13% है, China का 18% है। एंड अगर क्वांटम की आप बात करो तो लगभग $17,000 बिलियन का ट्रेड हो चुका है इन 5 सालों में बिटवीन यूएस एंड चाइना। Now this article basically tells you कि क्या क्या चीजें यूएस इंपोर्ट करता है चाइना से। So इसमें maximum percentages of electrical machinery which is 15%, then there is vehicle and their parts 11%, then there is nuclear machinery and appliances which is again 9%। एंड चाइना का जो शेयर है लार्जेस्ट है इन कुछ 15-20 चीजों में, जिसमें से मैक्सिमम आर इलेक्ट्रिकल एंड न्यूक्लियर मशीनरी। उसके अलावा चाइना जो है बहुत सारा आयरन एंड स्टील एक्सपोर्ट करता है यूएस को, प्लास्टिक्स, क्लोथिंग, फर्नीचर, टॉयज, ये सारी चीजें भी एक्सपोर्ट करता है। एंड उसके अलावा इंस्ट्रूमेंट्स, ऑर्गेनिक केमिकल्स, रबर। दैट इज व्हाट द आर्टिकल इज सेइंग। ये बता रहा है कि कितना कितना कौन सी कंट्रीज का एक्सपोर्ट का शेयर है। एंड क्रक्स बिहाइंड टेलिंग ऑल दिस इज कि ये जो ट्रेड वॉर स्टार्ट हो गया है यूएस और चाइना के बीच, दिस इज गोइंग टू cost US because US is heavily reliant on China for a lot of things, and क्योंकि अब चाइना ने भी काउंटर टैरिफ्स लगा दिए, so things would become expensive for US as well. But it seems like Trump is okay with it. So yeah, that's what this article is. It's mostly numbers and data. All right, moving on to the third article and the final article for the day, which is India's opportunity at the AI Action Summit. तो AI Action Summit जैसा कि मैं आपको बता रहा था, this is the third edition, and फ्रांस ने इंडिया को इनवाइट किया कि भाई हम करा रहे हैं AI Summit इस बार होस्ट, आप हमारे को होस्ट बन जाओ, को चेयर बन जाओ। इससे पहले ये समिट 2 बार हो चुकी है। सबसे पहली हुई थी यूके में, ब्लेचली पार्क करके एक जगह है, वहां पे हुई थी।
in UK in 2023. देन उसके बाद ये हुई थी सियोल में. सियोल कहाँ पे? सियोल इज इन साउथ कोरिया, इज द कैपिटल ऑफ साउथ कोरिया. एंड वहाँ पे हुई थी ये 2024 में. अब 2025 में ये हो रही है पेरिस, फ्रांस में. एंड द को चेयर इज फ्रांस. एंड इंडिया के लिए इसलिए भी इम्पोर्टेंट है क्योंकि नेक्स्ट ईयर इंडिया चाहता है कि इंडिया की बारी आ जाए टू होस्ट द एआई समिट इन इंडिया. उसके अलावा एज वी वर डिस्कसिंग दैट इट इज एन अपॉर्चुनिटी फॉर इंडिया टू बिकम द वॉइस ऑफ द ग्लोबल साउथ. इंडिया काफी सारी चीजें यहाँ पे चाहता है. फर्स्टली इज लेवरेजिंग इट्स पोजीशन to put forward the agenda of the global south. Then India wants to advocate for a democratic access to AI, कि सब कंट्रीज को AI की एक्सेस, AI रिसोर्सेज की एक्सेस मिले ताकि सब लोग साथ में प्रोग्रेस कर पाए. एंड ऑफ कोर्स वी वांट टू डेवलप अ फ्रेमवर्क जिससे हम आइडेंटिफाई कर पाए AI के यूज केसेस क्या क्या है, कहाँ कहाँ AI को यूज कर सकते हैं, कैसे यूनिक कॉन्टेक्स्ट में ग्लोबल साउथ में AI को हम प्रायोरिटाइज करके यूज कर सकते हैं. सो ये सारी कुछ चीजें हैं जो इंडिया मैक्सिमाइज करना चाहता है इस अपॉर्चुनिटी के थ्रू. इससे पहले अभी हमने 2023 में एक मेजर समिट होस्ट करी थी विच वाज द G20 समिट, जहां पे हमने बहुत ज्यादा प्रो इनोवेशन, प्रो गवर्नेंस अप्रोच लाए थे हम लोग फॉर एआई इनोवेशन एंड डेवलपिंग एआई. तो उसी को आगे बढ़ाते हुए दिस ग्लोबल पार्टनरशिप ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है इंडिया होस्ट करना चाहता है नेक्स्ट ईयर. एंड उसके लिए इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि इंडिया पार्टिसिपेट्स एंड explains its role in the global south in development of AI. ठीक है जी. पहली जो मीटिंग थी उसमें जो है AI मॉडल्स की बात हुई थी जो यूके में हुई थी. सेकंड मीटिंग में इन्होंने बात करा था रिस्क मैनेजमेंट की कि AI से क्या क्या रिस्क हो सकते हैं, कैसे उससे हमें काउंटर करना है. बहुत सारी कंट्रीज ने पार्टिसिपेट किया था, यूएस, फ्रांस, जापान, सिंगापुर, EU कंट्रीज वगैरह वगैरह. सो अब जो पेरिस में हो रहा है समिट, उसका प्राइमरी फोकस ये है कि एआई से रिलेटेड इनोवेशन कैसे करी जाए, एआई से रिलेटेड पब्लिक इंटरेस्ट कैसे जनरेट किया जाए, एंड एआई से रिलेटेड जो गवर्नेंस इश्यूज आएंगे उनको कैसे टैकल किया जाए. और इंडिया इसमें ग्लोबल साउथ का एक पर्सपेक्टिव वहां पे जाके प्रोवाइड करना चाहता है. एंड दैट इज व्हाट द आर्टिकल इज सिंपली टेलिंग यू अबाउट. इट्स वेरी सिंपल, वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड. ठीक है, दैट ब्रिंग्स अस टू द एंड ऑफ टुडेज एनालिसिस. लेट्स क्विकली लुक एट द वोकैबुलरी ऑफ द डे. द फर्स्ट वर्ड इज इनकम्बेंट. अब ये वर्ड आपने काफी टाइम सुना हो, काफी बार सुना होगा. इलेक्शंस के टाइम पे एंटी इनकम्बेंसी आ गई है, या जो पर्सन पावर में है वो शायद पावर में रहे ना रहे ड्यू टू एंटी इनकम्बेंसी. इनकम्बेंट का मतलब क्या होता है? इनकम्बेंट इज अ पर्सन हु इज इन पावर, वन हु ऑक्यूपाइज अ पर्टिकुलर पोजीशन और प्लेस. तो अभी जैसे आप बोल सकते हो कि एंटी इनकम्बेंसी वर्कड इन फेवर ऑफ बीजेपी, कि जो अरविंद केजरीवाल पावर में थे 10 साल से, अब एंटी इनकम्बेंसी की वजह से, यानी कि वो उस पोजीशन में थे इतने लंबे टाइम तक, अब जो है पावर चेंज हो गई. सो दैट इज व्हाट इनकम्बेंट मींस, कि एक बंदा एक पोजीशन या एक जगह पे ऑक्यूपाइड हो. देन सिनोनिम्स आर ऑफिस होल्डर्स, इंडक्टीज और अवॉर्डीज. एंटोनिम्स आर प्रोस्पेक्ट्स, कंटेंडर्स और कॉम्पिटिटर्स. इन जनरल इंकम्बेंट्स हैव अ 94% चांस ऑफ बीइंग री-इलेक्टेड, यानी कि जो ऑलरेडी पोजीशन में है उनका 94% चांस. दिस इज जस्ट अ सेंटेंस यूसेज, नॉट अ फैक्ट. ओके, द नेक्स्ट वर्ड इज फ्लेजलिंग. फ्लेजलिंग मतलब थोड़ा अनाड़ी बंदा जिसने अभी अभी कुछ सीखना स्टार्ट किया है, या पर्सन हु इज जस्ट स्टार्टिंग आउट इन अ फील्ड ऑफ एक्टिविटी. अ नोविस, अ न्यूकमर, अ बिगिनर, inexperienced. Expert, master, professional would be antonyms. At hockey, he's still a fledgling and needs to work on his basic skating skills. The third word is wistful. Wistful का मतलब होता है showing or evoking a sad longing for an often idealized past. अगर आपने अपनी एक्स गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड के साथ सपने सुहाने सजाए थे, एक फॉरएवर हैप्पी एंडिंग किए, तो इस वैलेंटाइन वीक में हो सकता है आप भी विस्टफुल फील कर रहे हो. दैट इज showing or evoking a sad longing for an often idealized past. Nostalgic, dreamy, sloppy. Antonyms are hard-headed, unsentimental, hard-edged. She felt wistful looking through her college yearbook, remembering old friends she had not seen in decades. समझ गए आप लोग मतलब, I think. So these are the three words for the day. Wistful is one, fledgling is one, and incumbent is the third one. And that brings us to the end of today's session. I hope you all enjoyed it and learned something. चलो ठीक है. I'll see you all in the next one tomorrow. Till then, take care, keep learning, keep preparing. Signing off. Bye bye.